हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर हम कौन करते लेक्चर 5 पर्यंत हमें क्वेश्चन नंबर 10 पर्यंत सॉल्व कर दे। 3A तो हमें ऑलरेडी कर सारी हां एंड 3B रो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करिया प्रॉब्लम गुडा हमें क्वेश्चन नंबर टिल 10 टिल 10 हमें ऑलरेडी कंप्लीट कर सकते। आज हम कौन करबा 11 रो 15 पर्यंत स्टार्ट करबा। 11 12 13 14 15 टा ऑलरेडी 3.A रो क्वेश्चन गुडा आ आउथरे पुनी तुमको मैक्सिमम मिनिमम करियो तो 15 ने 14 पर्यंत करबा। ठीक अछि। आउ चैनल जो नुआ छो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। दैट इज L and S स्क्वायर कर दो। आउ एथरे काई ना जेई रे ए चैप्टर क्वेश्चन आसु। देयर इज नो जेई क्वेश्चन फ्रॉम LPP को वर्ष भी आसु। हां सेत पे ए जेई क्वेश्चन हमें पाइबानी 19 20 21 रो सेत पे यार जेई लेक्चर आछन। या पर इमीडिएटली हमर मैट्रिक्स स्टार्ट हे जो मैट्रिक्स सरला पर तार 2019 20 21 एंड इफ पॉसिबल 22 रो जेई क्वेश्चन रो मध्ये वीडियो आसु। ठीक अछि। तो स्टार्ट करबा लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 plus 3x2 सब्जेक्ट टू देखो प्रथम कंडीशन कोन अछि x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 50 x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल टू 80 and 2x1 plus x2 greater than equal to 20 x1 and x2 greater than or equal to 0 एमती अछि। तो फर्स्ट स्टेप हम कोन करछे कंसीडर all the inequations as equations, that is first inequation कौन आसीबो x1 plus x2 is equal to 50 let it be equation number 1 एथरे हम कोन करिया पॉइंट्स बाहर करिया पॉइंट्स किंतु बाहर करिया यदि x2 को 0 करिया तो x1 is equal to 50 ए दिटा सबसे इजी पॉइंट गोटे x एक्सिस ऊपर गोटे y एक्सिस ऊपर और one is on x1 and the other is on x2 x1 को 0 करिया तो x2 will be 50 डेटा पॉइंट पड़ा आसिया then x1 plus 2x2 is less than or equal to 80 so we'll consider this as equal to 80 या को हम कौन करिया equal to 80 करिया so this is equal to 80 यदि पॉइंट्स करिया x2 को 0 कले x1 is equal to 80 and x1 को 0 करिया तो x2 is equal to 40 these are the 2 points and 2x1 plus x2 is equal to 20 पॉइंट्स कहता है x2 को 0 कले x1 हेगला 10 and x1 को 0 कले x2 हेगला 20 10 0 0 20 हेगला नाउ ए तीनटा जगह लाइन को हम कोन करियो ग्राफ रे प्लॉट करियो। So eta hela tomra x2 axis and this one is your x1 axis. This is the point of intersection called origin. Now first point जो अच्छे हमारा 50, 0 let this is 50, 0 this is 50, 0 and let this will be 0, 50 गोटे लाइन बना दवा so this is your equation number 1. Now the second equation second point कौन कौन देखो second equation पे point 80, 0 0, 40 80, 0 80, 0 टा तमे कोठी 80 कर दियो 80, 0 and 0, 40 40 टा उठी के तळु कर दियो 50 टा तळु कर दो 40 ए दुटा इक्वेशन को जॉइन करी लाइन बना दियो सेकंड लाइन एटा कौन करियो ए दुटा इक्वेशन को जॉइन करियो एटा हेला इक्वेशन नंबर 2 this is your equation number 2 so this is 40 and this is 80 now the third equation which is 10, 0 and 0, 20 10, 0 this will be around 10, 0 0, 20 will be around this 0, 20 हेगला
So this is your equation number 3. And here it is 10, 10, 0, 0, 20. हेगला एबे देखिवा इन इक्वेशन रो कोटा कोठी अछि लेस देन कोटा ग्रेटर देन कोटा फर्स्ट टा लेस देन सेकंड टा लेस देन थर्ड टा ग्रेटर देन फर्स्ट लेस देन मतलब जो रीजन आयो फर्स्ट रो यार लेस देन इक्वल टू आसे तो फर्स्ट लाइन टा कोटा एटा होछि फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट लाइन रो लेस देन इक्वल टू टुवर्ड्स द ओरिजिन सेकंड लाइन रो भी लेस देन इक्वल टू टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड थर्ड वन रो ग्रेटर देन इक्वल टू माने एटा हेगला फिजिबल सो दिस इज योर फिजिबल तो एक्सट्रीम पॉइंट कोन हेगला एक्सट्रीम पॉइंट हेगला ए this has to be B, this will be C, this is D, and this is E. A, B, C, D, E is the feasible region. Okay. So A हमें जानते हैं 50,0, E we know 10,0, D 0,20, C 0,40. Only B पाई हमको 1 and 2 को solve करना पड़ेगा. So चलो जीवा. So देखो feasible region बन गया. एबे कौन करिवा हमें extreme points बाहर करिए. The extreme points of the feasible region are the extreme points of the feasible region are feasible region extreme point कौन हो देखो A 50,0, C 0,40, T 0,20, E 10,0, and for B solving equation 1 and 2. B is the point of intersection 1 and 2. देखो एटी 1 टा अछि 1 और 2 को सॉल्व करले B मिले इक्वेशन 1 and 2 simultaneously. तो 1 रो इक्वेशन कौन अछि देखो एठी x1 plus x2 is equal to 50. This is 1 and x1 plus 2x2 equal to 80. माइनस कर दो माइनस 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 तो x1 कैंसिल हो गया x2 minus 2x2 is x2 equal to minus 30 और x2 will be equal to 30. तो x2 मिल गया 30. तो using in x1 using in equation 1 तो x1 will be equal to 20. Why? Because x1 plus x2 50. So B coordinate will be 20, 30. 20, 30. Now we need to find the value of z, which is 4x1 plus 3x2. Since z is equal to 4x1 plus 3x2, therefore z at A is your 50, 0 is equal to 4 into 50 plus 3 into 0. 4 into 50 will be 200. Similarly, Z at B. What is B? B 20, 30. B 20, 30 equal to 4 into 20 plus 3 into 30. 4 into 20 will be equal to 80. 3 into 30 will be 90. 170. Therefore, Z at D and D is your 0, 40. So this is equal to 4 into 0 plus 3 into 40. So this will be 0 plus 120 and that is equal to 120. Similarly, Z at C, which is 0, 20 equal to 4 into 0 plus 3 into 20 and that is equal to 60. And Z at E माने 10, 0 is Z equal to 4 into 10 plus 3 into 0 and that is equal to 40. So one value we got 40, one value is 200, गोटे मिलला 170, गोटे मिलला 120, गोटे मिलला 60. जदि मैक्सिमम कहबो
200 हवा आंसर मिनिमम कहले 40 हवा आंसर अबे देखिबा कोन पचार मैक्सिमाइज मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन रे therefore z maximum is equal to 200 at x1 is equal to 50 and x2 is equal to 0. So this is the final answer. बुझिगला बुझिगला कौन कले सबको इन इक्वेशन को इक्वेशन बनेले ग्राफ बनेला पर फिजिबल रीजन बाछले इन इक्वेशन रो साइन देखले फिजिबल रीजन लेस देन इक्वल टू हेले टुवर्ड्स द ओरिजिन ग्रेटर देन इक्वल टू हेले अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्राफ बनिगला ग्राफ बनला पर हम कोन कले तार एक्सट्रीम पॉइंट गुडा बाहर कले एक्सट्रीम पॉइंट चारिटा हम पकड़ थिला ऑलरेडी ग्राफ तो देखा जाउतला अब बी टा हमें कैलकुलेट कले हां बी टा कैलकुलेट करके हमें कोन कले देखो बी टा कैलकुलेट करे हम एठी लिख देले बी हेगला हमर 20,30 आ सब वैल्यू रे हम लोग z फाइंड कले तो z टा कोन हला a रे हमर मैक्सिमम वैल्यू हला ठीक अछि कोन देतो ऑप्टिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x1 प्लस 25x2 या को ऑप्टिमाइज करे अछि कंडीशन दे हां कंस्ट्रेंट गुडा को कंसीडर all the inequations as equations सब इन इक्वेशन को इक्वेशन कंसीडर करे दैट इज minus 0.5 into x1 plus x2 equal to 2 पॉइंट्स कौन x2 को 0 कर देले x2 को 0 कर देले तो x1 कौन हेगला 2 डिवाइड बाय minus 0.5 0.5 माने 1/2 तो 4 हेगला तो -4, 0 बुझला कौन चला एमती होला देखो x2 टा हम 0 कर देले तो -0.5 into x1 x2 को तो 0 कर ले इक्वल टू 2 तो x1 इज इक्वल टू कौन हेगला -2 डिवाइड बाय 0.5 0.5 माने कौन 1/2 1/2 ऊपर पड़ेला तो -4 हेगला तो -4, 0 सिमिलरली यदि याकू 0 करबा x1 टा 0 करले x2 हेगला 2 नाउ एबे देखबा सेकंड लाइन इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 एटा बहुत सिंपल x2 टा को 0 कर दे x1 टा 2 हेगला एंड x1 को 0 करले x2 टा 2 हेगला एंड माइनस x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 5 80 पॉइंट्स कौन हेगला देखो x2 टा को 0 करले x1 हेगला -5 -1 इनफैक्ट x2 टा को 0 करले x1 हेगला -5 -5, 0 एंड x1 टा को 0 करले x2 हेगला 1 0 करले x1 -5 x1 टा को 0 करले x2 हेगला 1 चले ग्राफ बनेवा so this is x1 axis and this is x2 axis this will be x1 dash and this will be x2 dash चलो नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करिए फर्स्ट पॉइंट कौन है -4, 0 0, 2 -4, 0 -4 and 0, 2 this will be 2 this is 0, 2 and this is -4, 0 and this will be your equation number 1 this will be your equation number 1 now second line रो points देखिबा second line रो point होची 2, 0 और 0, 2 2, 0 and 0, 2 2, 0 माने around 8 के this is 2 and 0, 2 माने सही point line बना दवा तो draw a straight line containing these 2 points so this is your equation number 2 now equation number 3 -5, 0 and 0, 1 -5, 0 so -5, 0 8 here this is -5 and 0, 1 around 8 here this is your equation number 3 इन इक्वेशन रो साइन देखिबा इनइक्वालिटी बनेबा
First is less than equal to, mean towards the origin. Second greater than equal to, away from the origin. Third greater than equal to, away from the origin. First towards the origin. First is towards the origin. First is towards the origin, towards the origin. Second away from the origin, and third is also away from the origin. So this is your unbounded feasible region. This is your unbounded feasible region. Unbounded region को point of देखो extreme point हमारा तीनटा आछे. This is one extreme point. दुईटा आगे आछे, तीनटा नहीं दुईटा. A and B. A and B आमको जाना आछे 0,2. हमको A को फाइंड करेगा अच्छा A पाई हमें काउ सॉल्व करिया इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. देखो A वाला पॉइंट था, A दीटा पॉइंट लाइन द इंटरसेक्शन, तो 2 और 3 को सॉल्व करिया हम A टा फाइंड करिया. B वी नो 0,2. एक्सट्रीम पॉइंट बाहर करिया ना. द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर extreme points of the feasible region are extreme points of the feasible region are A and B. B which is 0,2 and for A solving equation 1 and 2 simultaneously. Equation 1 and 2, equation not 1 and 2, this 2 and 3. Equation 2 and 3 simultaneously. So second equation कौन है देखो x1 plus x2 which is x1 plus x2 equal to 2 and the third one is minus x1 plus 5x2 equal to 5. Add कर दो plus x1 minus x1 cancel हो गया तो 6x2 equal to 7 and x2 will be equal to 7 upon 6. Therefore using in 1 use कर दो 7 upon 6 equal to 2. So x1 equal to 2 minus 7 upon 6. So 12 minus 7 will be 5 upon 6. So A is x1 is 5 upon 6 and x2 will be equal to 7 upon 6. Now optimize कर optimum whichever is possible. कोटा possible होगा इठी minimum value possible होगा. Why? Because maximum value आपने कितने भी बेसी कर दी परिये. You can make any maximum value. Z can be made as large as possible. So maximum value exist करियो only minimum value आसबो either at A or at B. सेठी मजे हमको चेक करियो पड़ियो. Right? So since Z equal to 5x1 plus 25x2, since Z is equal to 5x1 plus 25x2, therefore Z at A is your 5 by 6, 7 by 6. Same 5 by 6, 7 by 6. So this is equal to Z equal to 5 into 5 by 6 plus 25 into 7 by 6. 5 into 5 will be 25 plus 25 into 7 will be 175 divided by 6 which is equal to 200 divided by 6. Similarly Z at B. B is your 0,2. So Z is equal to 5 into 0. X1 is 0 plus 25 into 2. So 25 into 2 will be equal to 50. And 200 by 6 कहता है so देखो 6 3 जा 18. 18 है 2 and 0. 20. 6 3 जाए तो 33 point something आसो. So this is your minimum value. Maximum value तो exist करियो ना since Z can be made like the total है. Z can be made as large as possible. As large as possible. So Z maximum does not exist. We cannot find Z maximum. So Z minimum कुठे असला A minimum असला and since the region is unbounded, आमे कौन करिया A रे गोटे parallel line draw करिया. आमे गोटे equation को draw करिया पड़ियो. को equation टा 5x1 plus 25x2. ए equation टा Z रो जो equation टा 5x1 plus 25x2 आउ हमको 5 by 6, 7 by 6 रो कौन Z रो value आस्थिला असला 200 upon 6. A line टा हमको draw करिया पड़ियो. So draw the line. Draw the line 5x1
plus 25x2 is equal to 200 upon 6. 200 upon 6. 5 रे डिवाइड कर देबे x1 plus 5x2 equal to 5 रे डिवाइड कले 540 डिवाइड बाय 6 which is equal to 20 upon ए लाइन टा ड्रा कर दे आउ एटा गोटे पैरेलल लाइन हबो एटा गोटे लाइन हबो आउ से हाफ प्लेन टा देखिबे एटा लेस देन इक्वल टू ड्रा करिवे कोन ड्रा करिवे लेस देन और इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू काइना मिनिमम वैल्यू टा तो एमती गोटे लाइन बनिबो तमरो एमती गोटे लाइन बनिबो थ्रू ए गोटे लाइन एमती बनिबो गोटे डॉटेड लाइन बनिबो थ्रू ए अब यार हाफ प्लेन देखिए लेस देन इक्वल टू माने तळु आसीबो रीजन थ्रू ए आमे गोटे कोन कले हाफ प्लेन बनेले थ्रू आउ ए जो हाफ प्लेन आमे बनेले ए हाफ प्लेन रो को भी पार्ट फिजिबल रीजन भीतर अछि कि नाही जदि फिजिबल रीजन भीतर रहिबो minimum value not possible and since the half plane which contains a does not contain any point in the feasible region therefore z the minimum is a point कोन लिखियो since the half plane does not since the half plane made by 5x1 plus 25x2 less than equal to 200 upon 6 does not contain any point of feasible region रो को भी पॉइंट को कंटेन करने therefore z रो जो मिनिमम वैल्यू आसीबो सेठी आसीबो 200 upon 6 at a which is 5 by 6 comma 7 by 6 and this is your final answer जदि को रीजन को कंटेन करथांदा जो हाफ प्लेन आसला से को रीजन को कंटेन करथले जेटर मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करि न था हां बुझ गेला चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एकदम सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन ता अछि z equal to 5x1 plus 2x2 है ना subject to minus 0.5x1 plus x2 less than equal to 2 second and third will be greater than equal तो कौन करिया again the same procedure consider all the inequations as equations so this is minus 0.5 into x1 plus x2 is equal to 2 equal to 2 तो x2 को 0 कर देले x1 हेगला -4 and x1 को 0 कर देले x2 हेगला 2 second line is x1 plus x2 greater than equal to 2 तो x2 को 0 करले x1 हेगला 2 and x1 को 0 करले x2 हेगला 2 and minus x1 plus 5x2 is equal to 5 या को 0 करले ये हेगला -5 and x1 को 0 करले x2 हेगला 1 सेम ग्राफ की देखत -4, 0 0, 2 2002 -5001 देखे दबा थोड़ा सेम ग्राफ टा की -4002 2002 -5, इक्वेशंस तो ऑलमोस्ट सेम आगा अछि नहीं कि खाली z रो वैल्यू टिके चेंज कर दे छ तो ग्राफ बने दबा फर्स्ट रे तापर आगु बस देखो से ग्राफ सब किछ सेम अछि खाली हमें z रो मिनिमम वैल्यू बाहर करियो और चेक करियो कोठी अछि z रो मिनिमम वैल्यू बाहर करियो और देखियो एटा कोठी अछि एक्सट्रीम पॉइंट्स आर नो द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर ग्राफ तो ऑलमोस्ट सेम ग्राफ सेम पॉइंट सब किछ सेम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ feasible region are B 0, 2 and for A solving equation 2 and 3 simultaneously. So after solving what you got A equal to 5 by 6, 7 by 6 the same point therefore Z equal to since Z equal to 5x1 plus 2x2 so z at a which is 5 by 6 7 by 6 is z equal to 5 into 5 by 6 plus 2 into
7 by 6. 5 into 5 will be 25. 2 into 7 will be 14 divided by 6. So this will be 39 upon 6. 39 upon 6. So this will be around 6 point something. This also can be written as 13 upon 2. 3 रे cancel कर दो. 13 upon 2 मतलब 6.5 exactly है ना 6.5. Similarly, z at b will be your 0, 2 is z equal to 5 into 0 plus 2 into 2. So 2 into 2 will be equal to 4. तो 4 ହେଇଗଲା minimum value, किंतु minimum value जदि हबो z can be made as large as possible, since unbounded region. Therefore z maximum does not exist. Z maximum does not exist. Now z minimum बाहर करिया पे हम कौन करिया गोटे लाइन टी प्लॉट करिया. को लाइन टा प्लॉट करिया. ड्रॉ द लाइन 5x1 plus 2x2 is equal to 4. तो x2 को 0 कले 4 by 5 ହେଇଗଲା and x1 को 0 कले इटा. तो a रू पास करियो लाइन टा. The line will pass through एमती गोटे लाइन पर जोटा हमर a रू पास करियो. आउ यार लेस देन इक्वल टू बनेगा. लेस देन इक्वल काहे ना मिनिमम वैल्यू कहै छै ना, तो लेस देन आउ इक्वल टू बनेगा. अब देखो ये जो हाफ प्लेन रहला से जो फिजिबल रीजन नो कोनोस पॉइंट को कंटेन कर छै कि नहीं. Since the half plane does not contain any point of the feasible region, since the half plane does not contain any point of the feasible region, therefore z maximum, z minimum, maximum तो does not exist है. z minimum equal to 4 at x1 equal to 0 and x2 equal to 2. कौन गड़बड़ कले पले बुझिलो. जो ग्राफ रो जो लाइन टा बना हबो ना काई ना b रे मिनिमम आछि ना, b रे मिनिमम आछि. तो लाइन टा b रे बनेबा ना. लाइन टा कोठी बनेबा b रे. ए सर नो लाइन टा बनेबा b रे. Still does not contain but line टा b रे बनेबा काई ना b रे मिनिमम वैल्यू आछि ना, तो b रे बनेबा लाइन. This is the line. Line equation कौन है इसको x1 plus x2 which will be less than or equal to which one. कौन point थिला 4 थिला तुमरा point. ए लाइन टा बन होला. And since the half plane does not contain any point in the feasible region, z minimum will be at b only. ठीक আছে हे गेला. नेक्स्ट स्टेप सेम क्वेश्चन अछि ऑप्टिमाइज करिके हमें कौन करिया. Consider all the inequations as equations. So this is minus x1 plus x2 equal to minus 1. Equation 1. x2 को 0 कर ले x1 हेगला 1 and x1 को 0 कर ले x2 हेगला 0. x1 को 0 कर दे x2 हेगला minus 1. x1 को 0 कर ले x2 will be equal to minus 1. Point है. Second line is your x1 plus x2 is equal to 6. तो 6, 0 and 0, 6 है दूटा point and x2 is equal to 5. So this is equation 2. This is x2 equal to 5 माने ये x1 एक्सिस को पैरेलल है जो 5 यूनिट डिस्टेंस रे पॉजिटिव साइड है. यहाँ पे कुछ करियो दरकार नहीं. चलो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट. First point 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, minus 1.
this is 1 and this is minus 1. First line, equation number 1. Second line by point source is 6, 0 and 0, 6. 6, 0, let it be here. 6, 0, 0, 6. 6, 0, 0, 6. So this is your equation number 2. Equation 1 to now the third equation is x2 is equal to 5. So this axis is your x1 axis and this is your x2 axis. x2 equal to 5. x2 equal to 5 माने एटा 6 अछि 6 रो तळु कुटी हबे. This is your equation number 3 and this is the value 5. Okay, inequality देखो, first row greater than, second row less than, third row less than. First row greater than, first line greater than, outside, second less than, third less than, feasible region, and this is bounded and this is bounded. तो condition एडी हमको कुछ दरकार नहीं. तो feasible region हे गेला. हमें extreme point गुडा देखिबा. extreme points are एटा गोटे point, एटा गोटे point जोगुडा हमको बाहर करिवार अछि. This we know 5 and this is your origin and this is 1, 0. So let this consider this as A, B, C, D and O. O is the origin. So ये हमारा feasible region. The extreme points of the feasible region are extreme points of the feasible region are A, which is 1, 0, D 0, 5. For B, solving 1 and 2. For B, solving 1 and 2. 1 is minus x1 plus x2 equal to minus 1. And 2 is x1 plus x2 is equal to 6. Add, so 2x1 equal to 5. So x1 will be equal to 5 by 2. If x1 is equal to 5 by 2, therefore x2 equal to, using it 2. Using in 2. x2 equal to 6 minus 5 by 2. 8 हमें substitute कर दो. That's 12 minus 5 will be 7 by 2. So this coordinate is your B equal to 5 by 2, 7 by 2. Now for C, solving equation 3 and equation 2. 2 and 3. 2 and 3. Now that is using x1 is equal to, x2 is equal to 5. x2 equal to 5 into. Therefore x1 will be equal to 1. So C will be equal to 1, 5. Now find the value of Z. Z equal to minus 10x1 plus 2x2. Since Z is equal to minus 10x1 plus 2x2, therefore Z at A, which is 1, 0, is Z is equal to minus 10 into 1 plus 2 into 0. So this is equal to minus 10. Similarly, Z at B. And what is B? B is your 5 by 2, 7 by 2. 5 by 2, 7 by 2 is Z is equal to minus 10 into 5 by 2 plus 2 into 7 by 2. Minus 50. 2 cancel कर ले 5, 2 cancel ले. So minus 25 plus 7. Minus 25 plus 7, which is equal to minus 18. Similarly, Z at C.
C is your x1 is equal to 1 and x2 equal to 5. So z equal to minus 10 into 1 plus 2 into 5. So 10 minus 10 will be equal to 0. D is 0, 5. Similarly, z at D, which is 0, 5. So z is equal to minus 10 into 0 plus 2 into 5, and this is equal to 10. So 10 minus 18 minus 10 and 0. कौन पचार ऑप्टिमम ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज माने मैक्सिमाइज एज वेल एज देखो हम बी पाई कौन कले 1 and 2 को सॉल्व कले 1 and 2 को तो x1 कैंसिल हो गला x2 इज इक्वल टू 7/2 x1 कैंसिल हो गला ना तो जेतले x1 कैंसिल होला 2x2 ओहो दिस इज 2x2 2x2 इक्वल टू 5 माने x2 इक्वल टू 5/2 x2 equal to 5/2 माने x1 6 minus 5/2 6 minus 5/2 will be this is x2 6 minus 5/2 will be 7/2 and b coordinate is x2 is 5/2, therefore x1 is 7/2. x1 so 7/2 comma 5/2. Next page को ଯିବା एठी हमें कोन करछे 5/2 7/2. It's not 5/2 7/2, it is 7/2 5/2. x1 is 7/2 and x2 is 5/2. एटा टिके करेक्शन करदो हम हैला z is equal to minus 10 into 7/2 plus 2 into 5/2. So 2 and 2 2 and 5. So this is equal to minus 35 plus 5 equal to minus 30. So z minimum equal to minus 30 at x1 is equal to 7/2 and x2 is equal to 5/2. So this is one of the answer, and z maximum is equal to, this is 10 only, at x1 is equal to 1 0, x1 equal to 0 and x2 is equal to 5. So this is your minimum and this is your maximum. Since this is a bounded region, both value can be possible. Sorrel exercise. It is end of LPP. This is the end of LPP. So we are in the next lecture we are coming with matrices. चैनल रो नुआ थियो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो आउ जेमती 12th पोर्शन चाली थियो along with 12th portion try to finish your JEE portions also. काई ना हमर एग्जाम परे हमको एते टाइम मिलियोनी JEE प्रिपेयर करले तो एबुटू प्रिपेयर करबे चालू मिस वन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर सहित दैट इज योर matrices. Until then, bye bye.